ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एमसीक्यूज ऑलरेडी किए थे. सो आज के लेक्चर में और कुछ एमसीक्यूज हम करेंगे. परफेक्ट. यस, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन. Yes. Okay, just read the question. V and I are given by the following equation in an AC circuit. Okay, V is equal to 100 sine 100t volt and I is equal to 100 sine 100t plus pi by 3 milliampere. Then what is the power in the circuit? Okay, so let us try to solve this. What is the power in the circuit? Okay, so see here, कोई भी सर्किट जो होता है उसके अंदर पावर जो होता है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है. पावर इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू cos phi, where phi stands for the phase difference between current and EMF, and this phase difference can be obtained from these equations. ये देखो यहाँ पे V जो है ये V हमको यहाँ पे मिल रहा है और I का जो इक्वेशन है वो यहाँ पे मिल रहा है. ये दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं, जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हमारे पास है, V इज इक्वल टू क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी होता है. तो इससे हमको मिल गया यहाँ पे बोलो उसको एक ही बात है. सो V नॉट इज एक्चुअली गोइंग टू बी 100 वोल्ट. ओके, एंड एट द सेम टाइम I नॉट जो है, I नॉट मतलब पीक करंट हियर, it is going to be 100 ampere. Okay, and omega can be found out to be simply equal to 100, no doubt. And at the same time phi, that is the phase difference between current and EMF, is given to be pi by 3. But see here, since here current leads, बराबर, तो करंट लीड कर रहा है यहाँ पे और वोल्टेज EMF जो है वो लैग कर रहा है. नॉर्मली हम क्या करते हैं, करंट को एक्स एक्सिस पे डालते हैं और EMF का जो एंगल है वो देखते हैं यहाँ पे. तो अगर हम सपोज यहाँ पे करंट को डाल देंगे आई नॉट को, तो उसके रिस्पेक्ट में EMF कहाँ पे आएगा, जबकि करंट लीड करना है तो EMF यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा. ये रहेगा EMF का डायरेक्शन, उसको हम V नॉट से डिनोट कर सकते हैं. एंड एंगल बिटवीन देम इज पाई बाय 3 रेडियन हियर. दैट मीन्स द एंगल फाई इज नेगेटिव here. We can just call it as minus of pi by 3 in this case. And if you just use it here, but यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है कि ERMS हमारे पास नहीं है. तो ERMS can actually be found out to be simply equal to E naught by root 2. Okay, तो यहाँ पे E naught मतलब ही V naught, जो कि यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो 100 को अगर root 2 से डिवाइड कर देंगे तो चल जाएगा और ये हमको ERMS मिल जाएगा. And in the same way, IRMS can also be found out to be simply equal to I naught by root 2, where I naught is the peak value of current, which is again given to be 100 only. Or we can just put both of these values here itself and just modify the formula only. तो यहाँ पे फॉर्मूला ही अगर हम मॉडिफाई कर देंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा ERMS, उसके बदले आएगा E नॉट बाय रूट 2 और IRMS के बदले आएगा I नॉट बाय रूट 2. रूट टू जस्ट मिलके यहाँ पे वो 2 हो जाएगा और उसको हम लिख सकेंगे आराम से हाफ ऑफ E नॉट इंटू आई नॉट इंटू कॉस फाई. ये भी और एक फॉर्मूला है, हमने ऑलरेडी देखा भी है ये. तो यहाँ पे अगर सारे वैल्यूज डाल देंगे तो E नॉट के बदले आएगा 100, आई नॉट के बदले बनेगा 100 और कॉस फाई, वेयर फाई इज गोइंग टू बी 60 डिग्री. ओके, पाई बाय 3 रेडियन मतलब 60 डिग्री हो गया वो. तो इसलिए वहाँ पे हम देख सकेंगे. तो ये 2 1 जा 2 50 जा, सो यहाँ पे बचेगा 50. ओके, और यहाँ पे 100 बचेगा और ये cos 60 जो है वो 1/2 बन जाता है, जिसको डिवाइड करके फिर से 50 आ जाएगा. तो 50 into 50 actually comes out to be 2500 watt. Okay, so we can just call it as 2.5 kilowatt. हाँ, मिली एम्पियर में है ना करंट. करेक्ट, करंट इज देयर इन मिली एम्पियर. ओके, सो यहाँ पे I जो है
वो 100 मिली एम्पियर आएगा, ना कि सिंपली एम्पियर। ओके, ये मिली एम्पियर अगर कर देंगे इसको, तो मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ तो इसलिए यहाँ पे इसको हमको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना जरूरी होगा, जिसे यस, सो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक्चुअली 2.5 ही बन जाएगा फाइनली। तो इसलिए 2.5 वैट which is there already in the option number C here will be the correct one. Okay, yes. Just try this next question on your own. I'll just come back in 2 minutes. Yes, have you tried this? Okay, so see here, a current of 50 by pi hertz frequency is passing through an AC circuit having series combination of the resistance of 100 ohm and inductance of 1 Henry. Okay, the phase difference between the voltage and current is, yes, so phase difference we have to find out. So अभी इसमें देखो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ये दो ही है. Okay, capacitance is not there, so you can just expect this circuit like this. ये suppose AC source है जो कि एक इंडक्टेंस के और रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड है इस तरह से. अभी इंडक्टेंस का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो XL और रेजिस्टेंस का R हुआ करता है. ठीक है, तो और फेज डिफरेंस जो है वो फेज डिफरेंस निकालने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. देखो नॉर्मली फेज डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है tan phi इज एक्चुअली XL माइनस XC अपॉन R, ये होता है. लेकिन जबकि यहाँ पे XC है ही नहीं क्योंकि कैपेसिटर इस सर्किट में ही नहीं है, तो बचा रहेगा सिर्फ XL. तो इसलिए हमको सिंपली XL अपॉन R करना पड़ेगा, दैट्स इट. सो उसके लिए लेकिन XL निकालना जरूरी है. तो XL का फॉर्मूला जो हमारे पास है ऑलरेडी, इट इज सिंपली 2 पाई FL, राइट है. तो ये अगर यूज करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 इंटू पाई, वेयर पाई इज केप्ट एज इट इज. यस, देन फ्रीक्वेंसी जो है वो दिया हुआ है ऑलरेडी 50 अपॉन पाई. ओके, एंड इंडक्टेंस इज ऑलरेडी गिवन 1 हेनरी. तो ये आपको यहाँ पे हमको पुट करना है. तो इसमें पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 इंटू 50 जो है वो 100 बन जाएगा. So this 100 ohm is actually going to be this value of XL, and already R is given to be 100 ohm. So we can just put them here and get this 100 upon 100, which becomes actually 1. And tan phi becomes equal to 1, means phi must be equal to 45. That's it. So 45 degree or pi by 4 radian must be the correct option, which is already there in the option number B here. Okay. See the next one. Yes, in an oscillating LC circuit, the maximum charge on the capacitor is Q. Okay, what will be the charge on the plate of the capacitor when the energy stored in magnetic field and electric field are equal? तो यहाँ पे देखो LC oscillations की बात चल रही है. Suppose this is inductor which is connected here in the circuit, and at the same time a capacitor is also connected here in this circuit parallel to this inductor here in this way. So ये L है और ये C है और इन दोनों से LC सर्किट बनता है. ठीक है, LC ऑसिलेटिंग सर्किट इसको ही बोलते हैं. अब यहाँ पे होता क्या है ना कि द एनर्जी इज जस्ट सर्कुलेटेड फ्रॉम कैपेसिटर टू इंडक्टर एंड देन फ्रॉम इंडक्टर टू कैपेसिटर बैक. तो इस तरह से ये एनर्जी जो है वो इंडक्टर से कैपेसिटर की तरफ और कैपेसिटर के से वापस इंडक्टर की तरफ सर्कुलेट होता रहता है. ठीक है, ऑसिलेशंस चलते रहते हैं. तो अभी ऑसिलेशंस के अंदर ये दिया हुआ है कि द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज गिवन टू बी Q हियर. ओके, तो मतलब Q इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर. सो हाउ विल इट बी कनेक्टेड टू द वोल्टेज देन. तो इस वोल्टेज के साथ वो कैसे कनेक्टेड होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं Q विल बी एक्चुअली इक्वल टू C इंटू B. ये इस तरह से लिख सकते हैं आराम से. यस, और V को हम EC लिख सकते हैं ठीक से. ठीक है, yes. ओके, उससे कुछ फायदा नहीं होगा. देखो यहाँ पे हमको ये इक्वेट करना है कि जब ये कैपेसिटर के अंदर जब फुल चार्ज होता है
तो उसका जो एनर्जी है वो कितना होगा, देखो दैट विल बी द मैक्सिमम एनर्जी इन द सर्किट व्हेन द इंडक्टर विल डोंट हैव एनी एनर्जी. तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द सर्किट कैन बी फाउंड आउट टू बी इक्वल टू maximum energy stored in the capacitor is actually equal to q square upon 2c. ये फॉर्मूला तो तुमको पता होगा ऑलरेडी, ये हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी किया है. ठीक है, अब ये हो गया मैक्सिमम एनर्जी. यस, बट अभी उन्होंने क्या बोला है कि व्हेन द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल. तो जब ये दोनों के अंदर का एनर्जी इक्वल होगा तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल यू ई, और इसका जो एनर्जी है उसको बोलेंगे स्मॉल यू बी. ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ ये है कि स्मॉल यू ई इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्मॉल यू बी. ओके, अभी स्मॉल यू के ई के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, अब यहाँ पे ये क्यू जो है वो तो मैक्सिमम चार्ज है. ठीक है, अभी जब ये थोड़ा सा इसमें से चार्ज अगर कम होगा तो एनर्जी भी कम होगा. तो क्योंकि यहाँ पे दोनों ये जो है पार्ट जो है मतलब जब मैक्सिमम चार्ज जब इस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा तो उस समय एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ भी एनर्जी नहीं रहेगा. दैट मीन्स दिस करेस्पॉन्ड्स टू यू बी टू बी जीरो. मतलब उस समय यू बी जो है वो जीरो रहेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ भी एनर्जी नहीं रहने वाला है क्योंकि कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड. द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज गोइंग टू बी मैक्सिमम. At that time, there will be no current flowing through the inductor, and hence there will be no energy in the inductor. ओके, तो इस कॉइल के अंदर कुछ भी एनर्जी नहीं रहेगा उस समय. लेकिन जब कुछ ना कुछ एनर्जी कॉइल के अंदर आएगा तो वो कहाँ से आएगा, जरूर कैपेसिटर का जो एनर्जी है वही तो स्प्लिट होगा कि नहीं दो पार्ट्स में. तो वही एक्चुअली कुछ जो एनर्जी है वो इंडक्टर के अक्रॉस आएगा और बचा हुआ जो एनर्जी है वो कैपेसिटर के अक्रॉस बचेगा. इसलिए यहाँ पे हमको यू ई इक्वल टू यू बी ये कंडीशन यूज करना है. लेकिन एट द सेम टाइम वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू ई प्लस यू बी मस्ट एक्चुअली बी इक्वल टू यू ई, कैपिटल यू ई. एक्चुअली ये जो इनिशियली जो कैपेसिटर के पास एनर्जी था वही यहाँ पे बट के दो पार्ट्स में बटने की वजह से वो आधा उसका जो कैपेसिटर के अक्रॉस आ गया और बचा हुआ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मतलब इंडक्टर के अंदर आ गया है. इसलिए लेकिन यहाँ पे अभी यू ई इक्वल टू यू बी होने से हम एक को दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं आराम से, जिसमें हमको यहाँ पे यू ई प्लस यू ई मिल जाएगा इक्वल टू कैपिटल यू ई. ओके, इसको हम टू यू ई इक्वल टू कैपिटल यू ई ऐसा भी लिख सकते हैं, नो डाउट. बट अभी यहाँ पे एक बात याद रखो कि जैसे ये कैपिटल यू ई को हमने कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी लिखा था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी इस स्मॉल यू ई को क्या लिख सकते हैं. अभी स्मॉल यू ई मतलब क्या है, कैपेसिटर के अंदर का एनर्जी जब कुछ एनर्जी उसका उस तरफ चला गया है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला गया है, तो ऐसे केस में इस कैपेसिटर के अंदर का जो चार्ज है वो मैक्सिमम तो नहीं रहेगा, कैपिटल क्यू के बराबर तो नहीं रहेगा, बट हो सकता है कि वो स्मॉल क्यू जो भी है वो वही हमको निकालना है एक्चुअली, तो उसके बराबर रह जाए. अगर क्यू इतना चार्ज उस समय उसके पास है तो उस केस में उसका जो एनर्जी है वो रहेगा एक्चुअली क्यू स्क्वायर बाय टू सी वंस अगेन, क्योंकि कैपेसिटी तो बदला ही नहीं है उसका, वो सेम है. इसलिए यहाँ पे हमको इसको कैंसिल करने आएगा. टू सी अगर कैंसिल कर देंगे तो हमको मिलेगा सिंपली टू क्यू स्क्वायर is going to be equal to simply capital Q square, right? And hence small q square becomes equal to capital Q square by 2, and hence q small q becomes actually q upon root 2, which is already there in option number B here, which must be correct one in this case. Okay, so next one here, there is an alternating voltage given as V is equal to root 2 into sine 100t volt. Okay, ये इस तरह से दिया हुआ है. Alternating voltage is applied to a capacitor of 1 microfarad. Okay, so capacitor is given to be 1 microfarad. Yes, the current reading of ammeter will be equal to. Okay, अभी current reading पूछा है, मतलब ये actually indirect क्या पूछा है हमको, RMS current पूछा है. Okay, याद रखो ठीक से, when the current reading is asked, it is the reading in the ammeter, and ammeter can measure the RMS value of current only. It cannot measure the peak value of current, or it cannot measure the instantaneous value of current, but it can measure the RMS value only. ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस्ड ये जो एमीटर्स है वो बने हुए होते हैं, तो इसीलिए IRMS हमको निकालना है. तो उसके लिए देखो ये अगर हम कंपेयर करेंगे ना, सॉरी 200 है ना यहाँ पे, सॉरी
Yes, so if we just equate this V is equal to V naught into sine omega t, then we can be able to get this V naught to be simply equal to 200 into root 2, okay? And at the same time, omega can also be found out to be equal to 100 simply. So once we get this V naught and omega, we can just try to find out the current in the circuit. First of all, we'll have to find out the VRMS, or we can call it as ERMS also. So what is going to be ERMS here? Which will be actually equal to E naught by root 2. Or in this case here, it will be V naught by root 2 actually. But V naught is already 200 root 2. And if we just divide it by root 2, then root 2 gets cancelled and we'll be left with simply 200 volt as this ERMS here. Once we get ERMS, we can easily find out the current IRMS just by dividing this ERMS by XC, just because there is nothing except capacitor in the whole circuit. पूरे सर्किट के अंदर just read करो एक क्वेश्चन फिर से, या फिर पूरे सर्किट के अंदर कैपेसिटर के अलावा कोई भी नहीं है. तो अगर ऐसा है तो उस केस में जो करंट फ्लो होगा इस सर्किट के अंदर वो एक्चुअली ERMS डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होगा जरूर. और ERMS तो ऑलरेडी हमारे पास है 200, ओके. और XC का जो वैल्यू है वो हमको सिर्फ निकालना पड़ेगा, जो हम निकाल सकते हैं आराम से क्योंकि हमारे पास सब चीजें तो है ऑलरेडी. ओमेगा है, जैसा कि हम जानते हैं XC is actually going to be equal to 1 upon omega C, right? Here omega is going to be 100 and C is actually 1 microfarad. तो यहाँ पे अगर हमने 100 को माइक्रोफैराड मतलब 10 raised to minus 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे हमको ये मिल जाएगा, that is 10 raised to 4 here, okay. So 10 raised to 4 will be actually the value of XC. We can just find it out. Yes, ये हमको XC मिल गया, okay. तो अगर XC मिल गया 10 raised to 4 तो जस्ट यहाँ पे डाल दो उसको. तो ये 10 raised to 4 यहाँ पे डाल देंगे तो हमको मिलेगा 200 upon 10 raised to 4 मतलब 2 into 10 raised to minus 2. That means it will be actually, if you just want to express it in terms of milliampere, see it here. तो हमको यहाँ पे इसको मिलीएम्पियर में एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए उसको लिखेंगे 20 into 10 raised to minus 3, no problem. And then we can just be able to express it as 20 milliampere. That means 20 is going to be actually the correct option here, okay. So next one, see this here. A coil having inductance of 1 millihenry is connected to an AC source. Its inductive reactance will be obtained to be 1 ohm. And then what will be the angular frequency in radian per second of an AC source? Okay, so see here, inductance is given to be 1 millihenry, मतलब वो बन गया 10 raised to minus 3 henry, okay. And the inductive reactance, मतलब XC is actually given here. Sorry, XL is actually given here. So XL is given to be 1 ohm, right? And at the same time, yes, frequency, angular frequency is to be found out. Means omega is to be found out. We already know that XL is actually equal to omega into L. So omega can be written to be simply XL upon L. So XL is nothing but 1 and L is actually 10 raised to minus 3. So it actually comes out to be 10 raised to plus 3. And hence we can just say that this omega will be equal to 10 raised to 3. That means 1000. So this A will be actually the correct option. Next, a coil of self-inductance 1 henry and resistance 200 ohm is connected to an AC source of frequency 200 by pi hertz. Then what is the phase difference between voltage and current? Okay, the phase difference between voltage and current is once again given by the same formula tan phi, that is equal to XL minus XC upon R. But if we just read this question here, then there is no capacitance here in this case, right? Capacitance है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ ये 1 henry का inductance दिया हुआ है और resistance दिया हुआ है. Capacitor is not there in the circuit, so XC can be considered to be 0 here, and hence we can just modify this formula and write it as tan phi is equal to simply XL upon R. That's it. And XL can be found out separately because we have the formula for XL, that is omega into L, okay. So if you just put this value of omega as 2 pi f and that is multiplied by L, क्योंकि frequency यहाँ पे दिया हुआ है देखो, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 2 pi into frequency which is 200 upon pi, okay, into L,
is given to be 1 Henry. So this 1 is multiplied here, pi gets cancelled and we'll be left with simply 400 ohm. Okay, तो यहाँ पे अगर इसको हम डाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 400 और R के बदले आएगा 200. So that we can just say this will be simply 2. Okay, 200 और 400 कैंसिल होके सिर्फ 2 बचेगा. So अगर tan phi का वैल्यू 2 है तो ये तुमको पता है ऑलरेडी कि tan 45 is actually 1, right? And tan of all the angles which are greater than 45 is greater than 1. And this tan अगर टेबल में देखेंगे ठीक से, tangent नेचुरल tangent के टेबल में अगर देखेंगे ना तो tan 63 it becomes 2 for the first time, remember. तो ये जो tan 63 जो है डिग्री वो 2 बनता है. तो इसीलिए यहाँ पे हमको अगर tan phi 2 है तो phi का वैल्यू 63 सिलेक्ट करना जरूरी है. So this will be the correct option in this case here. Okay, and actually tan 72 becomes 3 almost, and tan 75 तो चलो 4 के आसपास भी चला जाता है almost, no doubt. So let us next take the next one. Yes, in an AC circuit of inductance 50 millihenry and negligible resistance 500 picofarad. हाँ 500 picofarad मतलब ये कैपेसिटर है. It's connected in series. Okay, the resonance frequency for the given circuit is. Okay, resonance frequency के लिए लगता ही क्या है, दो ही चीजें लगती है, L और C बस. So resonance frequency का जो फॉर्मूला हमारे पास है F is equal to 1/2 pi root LC. तो उसको अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1/2 into pi, where pi is going to be 3 point, या चलो रखो वैसे ही pi को, क्योंकि आंसर में हमको चाहिए यहाँ पे. देखो ठीक से सभी ऑप्शंस के अंदर pi है ऑलरेडी, तो इसलिए उसको हम लिख देंगे pi into root of L. What is L here? It is 50 millihenry. तो उसको हमको लिखना होगा 50 into 10⁻³ एक्चुअली. और C जो है वो 500 पिकोफैरड है. तो 500 पिकोफैरड, पिको मतलब कितना, 10⁻12, भूलो मत. तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 500 into 10⁻12. Okay, so here it becomes 1/2 into pi into root of, what is this here? See, 5 into 5 becomes 25. Okay, just write it as 25, and here it will be 10 का जो पावर है वो अगर करेक्ट करेंगे पूरा तो कितना मिलेगा. देखो -3 - 12 becomes 10⁻15, but +3 remains 10⁻12. Okay, or we can just consider that this 3 and this 10⁻³ just get cancelled, and we'll be left with 10⁻12 as it is here in the denominator. So if we just take the square root of this 25 into 10⁻12, it comes out to be actually 1/2 pi into 25 का square root 5 और 10⁻12 का square root 10⁻6, right? And if we just make this 2 into 5 10, then it will become 10⁻5, which goes up and becomes 10⁻+5. So here it is 10⁻+5 upon pi. This is actually going to be the frequency in hertz. That's all, which is there in option A here. Next, yes, a capacitor of capacitance 2 microfarad is connected to the tank circuit. Tank circuit मतलब LC oscillations only है, याद रखो ठीक से. Tank circuit मतलब LC oscillations with a frequency 1 kilohertz. If the current obtained is 2 milliampere, then the voltage across capacitor will be. Yes, so see here, tank circuit के अंदर जो है उसका जो frequency होता है, तो frequency of tank circuit is also given by the same formula, that is 1/2 pi root LC. Okay, तो अगर ये फॉर्मूला हम रीअरेंज करेंगे थोड़ा तो फ्रीक्वेंसी F तो दिया हुआ है यहाँ पे, बट कैपेसिटर नहीं दिया है. कैपेसिटेंस, हाँ कैपेसिटेंस भी दिया है, इंडक्टेंस नहीं दिया है. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द इंडक्टेंस. तो वी कैन जस्ट F square is equal to 1/4 pi square into LC, which gives L is equal to 1/4 pi square into FC, so that L becomes actually equal to 1/4 into pi square का जो वैल्यू है वो 10 बनता है, almost take it as 10.
frequency is already given 1 kilohertz, मतलब वो 10⁻³ हर्ट्ज हो गया, और कैपेसिटी जो है वो दिया हुआ है ऑलरेडी 2 माइक्रोफेरेड, तो उसको हम डाल देंगे यहाँ पे, तो 2 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 डाल के उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 4 into 2 is 8, so we can just write it as 1/8 into 10⁻³ plus 1 4, and -6 becomes -2, goes up becomes +2, so here it is 100/8. okay, तो 100/8 मतलब ऑलमोस्ट वो बन गया 12.5, यस, हेनरी. okay, 12.5 Henry. Yes, but we want to find out the voltage across the capacitor. After all, voltage is going to be the same across inductor as well as capacitor. So if 2 milliampere current is flowing through the circuit, then कैपेसिटेंस तो सॉरी इंडक्टेंस तो हमको मिल गया, कैपेसिटेंस ऑलरेडी है हमारे पास. तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मतलब EC will actually be equal to IRMS into XC, इतना तो हम बोल सकते हैं आराम से. But IRMS is already given to be 2 milliampere, and XC can be replaced by 1/2 pi FC, and C is already given. Okay, so IRMS actually as it is, and XC के बदले अगर हम डाल देंगे 1/2 pi FC, तो इसके नीचे 2 pi FC आ जाएगा. तो यहाँ पे IRMS को रिप्लेस करेंगे 2 मिलियम्पियर से, जो कि 2 into 10⁻³ है, और 2 pi मतलब 3.14, and F, which is frequency, which is given to be 10⁻³, and C, which is given to be capacitance of the capacitor, which is 2 microfarad. So it will be 2 into 10⁻⁶ in this case. So if we just simplify this further, this 2 gets cancelled, and 10⁻³ yes, disconnect हुआ था शायद. Okay, let us come back to the board. Here we can just see that the 1/6.28 actually comes out to be 0.159. Okay, it should be actually 0.159 volt. Okay, let us see the next. Yes, a circuit connected with the source of 230 volt draws a current of 2 ampere, and power consumed from it is 100 watt. Okay, then the power factor in the circuit is, yes, we know that the power consumed in a circuit is always equal to ERMS into IRMS into power factor, that is cos phi, right?
So everything is given here. Power consumed here is given to be 100 watt. ERMS, that means the RMS value of voltage is given to be 230 volt. Unless it until it is mentioned, you have to take it as a RMS value only. And जब करंट बोलते हैं, सिर्फ करंट बोल दिया है तो वो RMS करंट ही है, तो वो 2 एम्पियर दिया हुआ है। और पावर फैक्टर तो हमको निकालना है, मिल जाएगा आराम से, क्योंकि ये जो है नीचे हम डाल सकते हैं इसको, तो 100 डिवाइडेड बाय 460, ओके, 100 divided by 460, that will be the power factor. That's it. Just find it out. Approximately it will be actually 10 by 46. If we just reduce it by 2 still further, then we get this 5 2 5s are, and here it will be 2 23s are, so it becomes actually 5 by 23. If we just multiply it by 5, नहीं, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो अप्रोक्सीमेटली ये 23 इंटू 4 कितना बनता है? ऊपर तो ये 20 बनेगा, बट नीचे 23 4 जा 92 बनता है, 92. So we can just consider this 92 approximately 100 and just expect the answer to be 0.2 approximately, slightly greater than that, because we have approximated to 100 ना, तो 100 जो 92 से बड़ा है, तो इसलिए आंसर एक्चुअली इससे बड़ा आएगा, तो इसलिए 0.22 can be considered to be the correct option. Okay, let us see the next one. In an AC circuit, the voltage applied is 220 sine 100t. If the impedance of the circuit is 110 ohm and the phase difference between the voltage and current is 60 degree, then what is the power consumption here? Again, power consumption is given by the formula. अब देखो यहाँ पे हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे E नॉट दिया हुआ है, राइट, ये E नॉट है, ओके, तो E नॉट के फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला हमको मिलता है? वैसे तो देखो ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi, ये फॉर्मूला हुआ करता है पावर के लिए, लेकिन ERMS जो है इट कैन आल्सो बी रिटन एज E नॉट बाय √2, ओके, एंड IRMS कैन बी एक्चुअली रिटन एज ERMS बाय Z, okay, and cos phi as it is, and also E naught by √2 kept as it is, and here ERMS once again is put as E naught by √2 once again, तो ये E naught by √2 बन जाएगा, और यहाँ पे 1/z into cos phi बनेगा, और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकेंगे आराम से 1/2 into E naught square by z, ओके, ये z है, into cos phi, that's it. ये भी एक फॉर्मूला है जो हमने ऑलरेडी डिराइव भी किया था, थ्योरी के अंदर बताया भी था ये फॉर्मूला होता है करके, ठीक है, तो हाफ ऑफ ये अगर डायरेक्ट भी यूज करते हैं हम यहाँ पे तो भी हमको आंसर मिल जाएगा, देखो E नॉट स्क्वायर, E नॉट हमको यूज करना है यहाँ पे, जो कि 220 दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए ये 220 का स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा, नीचे Z impedance of the circuit which is already given to be 110 here, so ये 110 यहाँ पे लग जाएगा into cos phi, where phi is given to be 60 degree, so we can just multiply it by cos 60 here and get this 1/2 into 220 square can be written actually as 220 into 220, that is to be divided by 110 once, and cos phi is again 1/2, so here 2 ones are 210s are, and here again 2 ones are 210s are, and 110 gets cancelled, and we'll simply left with 110 watt as a final power, which is already there in the option B here. Next, electrical device is connected with an AC supply. Voltage and current are given by expressions V is equal to 5 cos omega t volt, and current I is given to be 2 sin omega t, that is in ampere, okay, so the power dissipated in the circuit is, okay, so see, अब यहाँ पे इस cos को हम कैसा लिख सकते हैं बताएं, इसको हम लिख सकते हैं sin of omega t plus pi/2, करेक्ट है, so that means EMF and voltage, sorry EMF and current, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, pi/2 है,
ये अगर क्लियर कट पता चल रहा है तो cos phi कितना होता है? Cos phi remains 0 just because cos pi by 2 is going to be 0, and since power factor itself is 0, the power consumed here, which is given by ERMS into IRMS into cos phi. So since cos phi is 0, everything will become 0, and hence the power consumed will also be 0, which is going to be their A option correct here. Next, in the given circuit, total VRMS and IRMS passing from various components in the circuit are shown. Then the total IRMS is, okay, total IRMS हमको निकालना है, जो main current flowing through this whole circuit, पूरे combination में कितना current flow हो रहा है, RMS current flow हो रहा है, वो हमको ढूंढ के निकालना है. चलो ठीक है. So if we just consider these IL, IR, IL and IC as the peak values, okay, then we can just draw the diagram. Phasor diagram यहाँ पे हम draw कर सकते हैं. Since all these three are connected in parallel here, so the voltage or RMS voltage or the peak voltage here in this case is going to be constant, right? So ये peak voltage जो है वो सबके लिए same रहेगा. इसीलिए हम इस voltage को यहाँ पे ले लेंगे along the positive direction of x-axis. Okay, this is the V naught. V naught मतलब क्या है यहाँ पे? It is the peak voltage and which is taken in the reference. Okay, अभी यहाँ पे हम IR के बारे में क्या बोल सकते हैं? IR के बारे में, IR means the current in the resistance here. तो resistance के अंदर का जो current होता है वो actually same phase में रहता है, ठीक है, as that of the voltage, and therefore we can just express this IR to be in the same direction as that of the voltage here like this. Okay, this is the current in the resistance which can be denoted by IR in this case. इसको हम IR बोल सकते हैं. चलो ठीक है. अभी what can we say about the current in the inductance? Inductance के अंदर का जो current है वो actually voltage को lag करता है. इसीलिए voltage अगर हमने यहाँ पे x axis के along दिखाया है तो lag करने का मतलब क्या होगा? Current in the inductance, that means IL will be shown to be downwards like this. Okay, यहाँ पे नीचे की तरफ वो हमको दिखाना पड़ेगा जरूर. So this will be the phasor of IL. You can see. Yes. Okay, and at the same time, if you just talk about this IC here, IC मतलब the current in the capacitor, which we know already that it leads the voltage, and therefore the current in the capacitor can be drawn to be along the positive direction of y-axis here in this way. Okay, which will be supposed to be leading the voltage. Yes, so this will be actually IC. Okay, and now if we just try to find out the resultant of all these three, then that will be actually the RMS current or peak current flowing through the whole circuit. So अगर हम यहाँ पे resultant draw करने के लिए try करेंगे तो पता चलेगा पहले हमको इस IC का और IL का resultant draw निकालना होगा, ठीक है. तो वो रहेगा actually suppose we denote it by in the upward direction. IC suppose बड़ा है तो उस केस में ये जो है ऊपर के डायरेक्शन में हमको मिल जाएगा. This is actually going to be the resultant of IC and IL, which will be actually denoted by IC minus IL. Okay. Yes, so we can just denote it by IC minus IL. Yes, and at the same time, IR is also there, which is going to be along the positive direction of x-axis. So now, in order to find out the resultant of all these three, we'll have to just take a resultant of this here. ये जो rectangle बना हुआ है, इस rectangle का हमको resultant निकालना पड़ेगा, बस खत्म. तो अगर हम इन दोनों का resultant अगर निकालते हैं तो वो बनेगा actually I naught. Okay, ये बन गया हमारा I naught. Yes, that means the net current flowing through the whole circuit. तो इस पूरे सर्किट के अंदर का जो नेट करंट है वो हमको इसमें से मिलने वाला है. तो अगर हम रिलेशनशिप देखेंगे इनके बीच में तो हमको मिलेगा I naught square is actually going to be equal to ये IR square
पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, आई आर स्क्वायर प्लस हियर इट इज आई सी माइनस आई एल का होल स्क्वायर, करेक्ट है, एंड हेंस वी कैन जस्ट गेट दैट आई नॉट here in this case will actually be root of this whole thing. That means IR square plus IC minus IL ka whole square. There should be a bracket here. Then it will be the correct option. Okay. Even this can also be supposed to be the correct option if IL is greater than IC. But लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है कि IL बड़ा है या IC बड़ा है, तो इसलिए हम ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, unless or until it is given that IL is greater than IC, ठीक है, otherwise this option will be correct, ठीक है, when IC is greater than IL. Okay, so ठीक है, so next will be yes, in the circuit given below the reading of voltmeter across L is okay, तो L के अंदर का जो वोल्टमीटर है उसका रीडिंग हमको ढूंढ के निकालना है, बाकी सबका वोल्टेज दिया हुआ है, ये देखो ये 230 volt is the net RMS voltage across the combination. This 10 volt is going to be the voltage across the resistance. This 20 volt is going to be the voltage across capacitance, and we want to find out the voltage across this inductance. So all these three satisfy the relationship, that is V square is equal to VR square plus BL minus VC the whole square, करेक्ट है, ये रिलेशनशिप हमारे पास है. तो यहाँ पे अगर हम सपोज ये V स्क्वायर के बदले डाल देंगे 230, तो वो बन जाएगा 230 का स्क्वायर, जबकि VR जो कि 10 दिया हुआ है तो ये बन गया 10 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे VL तो वो तो निकालना है, माइनस VC जो कि 20 दिया हुआ है और उसका भी स्क्वायर हमको करना है. If we just try to simplify this further, then we get this 230 का whole square जो बन गया, yes, it will be actually 230 into 230. We can just write it as, or just write it as 52900. Okay, which is equal to 100 plus here if we just keep it as it is, VL minus 20 का whole square as it is. तो ये 100 इस तरफ लेके जाएंगे, तो 900 minus 100 becomes 800. So we can just write it as 5 to 800 is going to be VL minus 20 का whole square. इसमें अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो हमको मिलेगा VL minus 20 to be simply equal to the square root of this whole thing, that is 52800, right? And this 20 can be shifted to that side so that we get this VL to be simply equal to 20 plus root of this 52800. Okay, but as we know that 52900 का स्क्वायर रूट कौन है, 230 है, बराबर. तो इसका जो स्क्वायर रूट है 52800 का स्क्वायर रूट वो एक्चुअली 230 से थोड़ा कम आएगा, तो वी कैन जस्ट टेक इट एज 239, 225 या 226 के आसपास उसको हम ले सकते हैं आराम से, या 229 ले लेंगे, चलो इतना याद रखो, वो 230 से थोड़ा कम रहेगा. और अगर हम इसमें 20 ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो 249 के आसपास आ जाएगा. देखो 249, and there is only one option like this, 249.8 volt. So that will be selected as a correct option as a final. Okay, next, the current passing through the coil is ampere and power consumed is 108 watt. If AC voltage is 120 volt and frequency is 50 hertz, then the resistance of the circuit is, okay, तो resistance हमको निकालना है. देखो कॉइल का जो करंट दिया हुआ है वो 5 एम्पियर दिया हुआ है, so unless and until as mentioned we can take it as a RMS current only. So take it as RMS current, IRMS is given to be 5 ampere. Okay, power consumed here is given to be 108 watt. Okay, and AC voltage of 120 volt and frequency 50 hertz is connected. Okay, तो मतलब AC voltage जो है उसको हम ERMS बोल सकते हैं आराम से, because it is not mentioned.
So AC voltage is going to be 120 volt and frequency is given to be 50 hertz. So F is given to be 50 here. The resistance of the circuit is to be found out. Okay, that means the circuit is just like this. It contains a AC source which is connected to an inductor in series with a resistor like this. Okay, तो ये अगर सर्किट है तो इस सर्किट के अंदर हमको पावर पावर दिया हुआ है. तो ऐसे केस में देखो क्या करना है हमको. पावर के लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है ERMS into IRMS into power factor, right? That means cos phi. But this phi is not given here. So cos phi के लिए separate formula हमारे पास है. That is R upon Z, right? है R upon Z. So if we just try to find it out, R upon Z. So R तो चलो R ही है, लेकिन Z जो है इस केस में रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस सिंपली XL स्क्वायर हमको मिल जाएगा, क्योंकि XC is not already not there. So therefore R, which is resistance, which is to be found out. We don't know how much it is. R kept as it is. And what is XL? Okay, XL is not given here. Yes, but here, see, IRMS is given, ERMS is given. So we can just find out the Z value from this only. Okay, तो ये पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, हमको Z डायरेक्ट मिलने वाला है. देखो, Z can be supposed to be equal to ERMS upon IRMS, right? So ERMS is given to be actually 120 volt and IRMS is already there 5 volt, 5 ampere. So 120 divided by 5 comes out to be actually 24. Okay, so this 24 ohm is going to be the value of Z in this case. Okay. Yes, so no need to do all these things here. ये पूरा जो हमने जो किया उसको just भूल जाओ 1-2 मिनट के लिए. Yes, and just we can just put this value of cos phi here. तो cos phi का जो value है यहाँ पे डाल देंगे R upon Z, where R is kept as it is and Z is going to be 24 in this case. Okay, तो ये जो cos phi का value है वो अगर हमने यहाँ पे रख दिया तो देखो क्या होगा. Power which is given to be 108 in this case. तो ये 108 डाल दिया. ERMS is already given to be 120 in this case. IRMS is also given there, that is 5 ampere, and cos phi which is going to be R upon 24. अब इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ R मिसिंग है, आराम से निकल जाएगा कि हमको पता है ये 24 जो है वो इस 120 के साथ कैंसिल होके 5 बचेगा, राइट? And 5 into 5 becomes 25. And if 108 is equal to 25 R, then R can be supposed to be actually 108 upon 25, which actually comes out to be, अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो सिंपली 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको फटाफट, जिससे न्यूमरेटर में आ जाएगा 432 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा सिंपली 100, जो कि 0.2 डिजिट्स पीछे जाके वो 4.32 बन जाएगा as a resistance in ohm, which is there in option D in this case here. Okay, 4.3 ohm approximately, but not necessary that this formula ऐसे ही हमको करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. Actually we can just do one thing, ये फॉर्मूला ही जो है वो हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. देखो, हमको IRMS दिया हुआ है, ERMS भी दिया हुआ है, but cos phi नहीं दिया है, so we can just replace it by R by Z. Yes, power is actually ERMS into IRMS into cos phi. Okay, but cos phi is not given. We can just replace it by R by Z. Okay, so if you just do that, then R by Z is kept here. But as we already know that this ERMS upon Z becomes IRMS, as we can just see from this formula only. तो इससे हमको मिलता है P is equal to simply IRMS into IRMS once again into R. That's it. So power can be written to be simply equal to I square RMS into R, and hence R can actually be written to be simply equal to power upon IRMS square. Okay, where
power is already there, that is 108, and IRMS is already there, that is 5. So if we just square this 5, it becomes 25, and we get this 108 upon 25 to be the resistance, which is already we have done it here. Okay, 108 upon 25 करने के लिए तो हमने ये सब किया, right? तो इसलिए इस तरफ से भी हमको वही आंसर मिलता है. Just we have to put the formula correctly. तो अगर फॉर्मूले ठीक से पुट करेंगे तो आंसर करेक्ट आ जाएगा. राइट, चलो ठीक है. सो देयर आर मोर क्वेश्चंस. Nine questions are already there. So let us do them in the next lecture tomorrow. Okay. So let us stop here. Thank you all of you.